Hi, Atul. Thank you so much for joining us on Blitz Business. It's such a pleasure to have you. Thanks, Ashish. Thanks for having me on the show. Awesome. Atul, tell us a little bit about yourself first. Then we'll dive deeper into multiple aspects. Okay, so through education, I'm a mechanical engineer. I graduated from IIT Delhi in 2009 and started my career as an investment banker. I worked with Credit Suisse, mostly in Asia, in Hong Kong, in Singapore, in financial institutions group. Worked there for around 6, 7 years. Then came back to India and in 2015 to work in the Indian startup ecosystem. Startup ecosystem was fairly matured in India by that time, so started working in Indian fintech space. Initially worked with a company called Rubik, where I was leading their business development efforts. Then worked with Bazaar for a bit, and in 2020 started Basic, and it's been now around 4 years that we're building Basic and trying to increase the penetration of mortgages in India. Understood. Understood. So first is how did the name Basic came? A lot of thought process, or you were like, "Ab mil nahi raha, kuch just put it Basic." Something like that. When in 2020 we realized that there is a huge problem of housing in India, and actually the problem was on our TV screens. If you see, people were migrating from cities to their native places, so we wanted to do something in mortgages. We got some funding, our seed funding of 500k USD from Picus Capital, and now the funding was there, idea was there. In fact, team was also ready, and we had to, it took us a lot of iterations to come to a company name, and nothing was getting figured out. So we just thought that okay, we have an agent driven business, so let's aim for an English word which everyone can use. So basic is something which people can speak, and again, home is something which is basic to everyone. So, and it's something unique, so we said that okay, let's call it basic home loan, and it will also give a feel of that we are into affordable housing, that we are doing it for basic kind of houses, not fancy houses. So that's how the name came into it. There was no thought process behind it. It was more like that we have to now finalize something, and that's how we put the name there. तो कोई आप पे फैंसी लोन के लिए आएगा, वो आप नहीं दोगे फैंसी घर किसी को? See, idea is ki in India, mortgage penetration is very low, and especially in affordable housing segment, there is a lot of issues. So, जो फैंसी घर अगर आप जो बोल रहे हैं, उसके लिए बहुत ऑप्शंस है कस्टमर के पास. People get pre-approvals in their bank accounts and everything already done. But in affordable, there is a lot of subjectivity. People have cash incomes, people don't have documentation, and it's a online plus offline kind of play where you cannot have completely digital journeys. So that is something where वो होता है ना, जहाँ बसड़ है वही बरकत है. तो वहां सबसे ज्यादा बसड़ है, तो वहीं पे आप कुछ बना सकते हैं. So that's why we focus more on affordable housing. Okay, awesome. So let's talk about this segment. Let's try to understand about this segment, what it is all about, what are the challenges. So help us understand, Atul, what is a typical ticket size someone comes to you, or in this segment in general, what are people looking for, like X amount of loan at X percentage? So help us understand the problem first, like what do they struggle with, and then we'll go ahead. See, in a typical kind of a home loan, people generally are more, sensitive to ROIs and EMIs. What will be the cash outflow? But in affordable, the mentality is different because since as the ticket size is smaller, so 1% here and there will not change a lot of things for the customer. I think the EMI will remain in the same age, but in the same range. But the major thing is how much loan you can get, because that person don't have enough money to put their own contribution. So suppose वो 20 लाख का घर ले रहा है, बंदे के पास 2 लाख रुपए हैं, and he will need 18 lakh rupees. So eligibility or the loan amount becomes a very big problem, or the major issue. So and that's something which people want. Secondly, the thing is, आज की डेट में there are not many options for the customers. There are so many banks and housing finance companies, but they are not like present everywhere. So what happens is, to get the right offer for the customer is a problem. And then if you see how these banks and HFCs operate, if you go to them first, they will ask a login fee from you, which is like a initial money deposit. Achha. When you go to these HFCs or banks, they will ask for a initial money deposit of anywhere around 3,000, 5,000, 10,000 rupees, and then only they will tell you their offer, that whether they can do the loan or not. Now, for a low income household, it's not
humanly possible, and it is also not financially wise to pay to 10 banks or HFCs and then discover the offer and then do comparison on their own. So they need some hand holding. And again, in loans, subjectivity is very high, especially in home loans, and it's going to stay with you for next 10-15 years. So people want to be very sure. So it's not something which people will buy directly online. Means they need some intermediary who can handhold them. Plus there is, issues of documentation, offline mortgage evaluation. So a lot of things are there. So which a person who is not familiar with the loan process will find very difficult to do on their own. So those are the things we are solving for the customer. Understood. So And typically by the the way, we don't charge yeah, anything to our customers. We don't charge anything to our customers, so our services are totally free for them. So that's why they when they get to know about us, they come to us. and what is a typical interest rate? So it can be anywhere based on customer profile, ranging from 9% to up to 18-17%. Now there are few HFCs who even charge into 20-22%. But for that, we have created our own lending product where we are lending in as in partnership with few banks, and we are doing the same kind of loans at 14. Understood. And where does someone find a 20 lakh home? Yeah, there are places. Means if you go to tier 2, tier 3 cities, in fact, ज़्यादा दूर क्या जाना है. Even if you go to say द्वारका expressway, वहाँ पे 1 RK type की जो constructions आ रही है, you will get a 25 lakh rupee decent apartment over there. Really? So this is so your category, Atul, is only for home loan, or do you plan to expand into other category also? See, as of now, we want to go deeper into home loans. The idea is that it's such a big market. Last year, about $175 billion of new home loans have been done, and I'm not counting refinancing. I'm not counting loan against property in this. And in next 4 to 5 years, it is expected that a market will be at $300 billion. So that's how the mortgages are growing in India. So you've seen this way. It's a low penetrated market in India. Mortgage to GDP ratio is just 10-11%. In US, UK, it's around 65%. So there is a lot of scope. So it's a less penetrated market, but a huge market. And I believe that the current incumbent players are not sufficient to meet the demand or to handle the demand properly. So this is a big opportunity to disruption, that you have a big underpenetrated market and there are no working solutions. So I believe home loan in itself is a big opportunity. And if we do it right, we can make a big company out of it. Since you're in this from this segment, Atul, and there are these news which keeps coming. DLF launch something. 100 crore में बिक गया 2 दिन में 1 दिन में. What's all that buzz? What's happening? See, obvious सी बात है कि DLF make quality homes, but they are not my customer. Means as in their customers are not our customers. We are more into affordable. But if you see Signature Global launch करता है तब भी ऐसे ही बिक जाता है. They are into affordable. So every segment, every market have best players and the worst players. So DLF is good in luxury segment. Then there is Signature. Then there are various other builders who are good in affordable segment. So we focus more on such kind of loans which are in affordable housing space. Understood. And so what is and how do you so you tie up with NBFC or you have your own balance sheet? How does it work? So when we started, we thought that what's the problem? The problem why people don't have houses means, in fact, if you see there are so many slums in India, and India is actually India is the highest homeless population in the world. By the way, that's a fact. And we thought that what's the problem? The problem is not the availability of land. We are the seventh largest country in the world, and the problem is not the availability of money. There are about 110 housing finance companies in India. They're sitting with capital and everyone wants to lend. They're looking for customers. It's not like that their capital is all deployed. The problem is the distribution, that how the customer finds the lender or how the lender finds the customer. So we started with distribution first, and in our first 2.5-3 years of the journey, we set up distribution in 30 cities. And again, in home loans, you need a offline leg. So what happens is that in India, we don't have a database of properties, so you cannot evaluate the asset digitally. You have to do it offline, so you need a ground presence. So that's why our model is digital. And we set up this distribution. We partnered with about 75 banks through digital integrations, through automations, that how we can provide the loans digitally to our customers. Then in the mid of last year, we have started entering into risk sharing arrangements with the bank. So now we have 5 such products on our platform where we are taking risk and we are doing the credit. And the idea was that if you see the traditional housing finance companies in India,
their cost to income ratios are very high because they operate through branches. And the drawback of branches is that they build branches in those areas where you already have the demand, because otherwise branch की profitability नहीं आएगी. एंड इससे पेनिट्रेशन इंक्रीज नहीं होता है इंडिया का. एंड सेकेंडली क्योंकि ब्रांच कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, सो दे हैव टू चार्ज हायर टू द कस्टमर. So we found out that HFC's का cost to income ratios around 70-80, whereas if you see the actual variable costs are not that high to the loan. So हमने क्या किया कि ये जो products बनाए हैं, these are the same products which other HFCs are doing at 18, 19, 20%. We are doing it at 14, 15% because our cost to income ratio is low. Our cost to income ratio is 35-40%, and that is only because of the fact that our model is branchless. We have agents who use my mobile app to do the loan. So our agent plus mobile app is the complete branch for the customer. That's what the differentiation we have created. And now Understood. this agent can be anywhere in India. So we can increase the penetration also. Even in small cities, we can do the loan. Let's touch a little bit about on the consumer aspect. So, Atul, according to the loans you have been giving or the data you have, what are the top three affordable home locations? In India, see, I am present in 30 cities. Out of that, I can tell you what are the good locations, because there are other locations also which must be good, but we have not expanded there yet. So, if you see, affordable housing projects are coming everywhere. Especially builders are also finding it good to build in tier 2, tier 3 cities, because now you have good infrastructure over there. You have communication and transportation channels over there, एंड वहां पे टर्न अराउंड भी जल्दी होता है कि प्रोजेक्ट जल्दी बनता है, चीप लेबर है, फटाफट बिक जाएगा. पहले ऐसा नहीं था. अब बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स a lot of new projects are coming in tier 2 cities. So मेरे हिसाब से if you go to जयपुर के आसपास एक वो पट्टा करके जगह है जयपुर के आउटसाइड पे, you will see a lot of affordable housing projects coming over there. Then even अगर आप मेट्रोज में भी देखेंगे, मुंबई के बाहर अगर आप विरार बोरीवली साइड जाएंगे, तो वो दैट इज द एरिया वेयर वी ऑपरेट. मीरा रोड, भयंदर, वहां पे भर के अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. देन पुणे मुंबई के बीच में एक पूरा जगह है, चिंचपोकली, ये सब जो आता है, वहां पे पूरा अफोर्डेबल का बेल्ट बन रहा है, बिकॉज सिटीज आर एक्सपेंडिंग, एंड अगेन पीपल आर मूविंग आउट ऑफ सिटीज, बिकॉज ऑब्वियसली मेजर सिटी में तो महंगा ही मिलेगा घर, बाहर न्यू कंस्ट्रक्शन आ रही है. उसी तरह इफ यू सी सिटीज लाइक वाइजैक, विजयवाड़ा, they are having very good projects. So these are some of the top cities, I'll say, where affordable housing is growing and where we have presence. And Atul, from consumer perspective, what are the few two, three things a consumer should be aware of if he's applying for home loan, either to you or to someone else? Just like what are the things first time home buyer for if they're applying for home loan, what do they need to be aware of? See, first thing is that they should be aware of their credit score, because many a times कभी कभी कस्टमर को पता नहीं होता कि कोई अनपेड क्रेडिट कार्ड ड्यू रह गया या कुछ रह गया जिससे आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट हो रखा है. बिकॉज कस्टमर की प्रोफाइल के लिए क्रेडिट स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपका आरओआई क्या होगा, आपका लोन टू वैल्यू क्या मिलेगा, वो बहुत जरूरी होता है कि इफ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड योर स्कोर इज गुड. Secondly, on the property side, I'll say that in mortgages, the evaluation is not only on the customer profile but also on the asset profile. So if you're buying a property, try to buy something which is from a reputed builder or maybe in a good location or locality. The reason is कि अगर property अच्छा होगा ना, तो value भी अच्छा मिलेगा, ROI भी अच्छा मिलेगा, और बैंक will also be comfortable in doing loan. HFC नहीं, किसी बैंक से ही लोन मिल जाए अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं. एंड देन ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपना एक जो टर्म होती है, टेक्निकल टर्म फायर, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, उसको थोड़ा फ्री रखना पड़ेगा. इफ यू ऑलरेडी हैव सम अदर लोन्स गोइंग ऑन, तो ट्राई कीजिए उसको यू रीपे इट अर्लियर, और मे बी यू स्ट्रक्चर इट इन दिस वे दैट यू हैव रूम so that you can get the maximum loan amount. As I told you that in our category, maximum loan amount is important, because people in low income households don't have that much savings. दे वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोन हो जाए. एंड इन दिस सेगमेंट में तो लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बताना भी नहीं पड़ता. ये लोग ऐसे बात करते हैं, इनके साथ हमें बात करनी पड़ती है कि आपको महीने का इतना देना है. सो दे डोंट नो कि आरओआई क्या है क्या नहीं है. वो सिंपल बात है कि हाँ भाई कितना देना पड़ेगा, मेरी सैलरी इतनी है, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा. सो यू हैव टू कीप दैट हेडरूम कि आपको एक अच्छा लोन अमाउंट मिल सके. सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड. And you were mentioning, builder should be good. So who are these good builders? All of us has seen in the past, like बहुत बदनामी हुई है. So in वो Delhi हुई है, NCR, बट आई गेस कि
देखिए, वो नोएडा साइड में हुआ है एंड वो बहुत सारे प्रोफाइल फंडिंग भी हुए हैं, गलत केसेस भी हुए हैं। बट आई गेस कि अभी रेरा के आने के बाद थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड एंड स्पेशली अगर मैं एनसीआर की बात करूँ तो गुड़गांव साइड अच्छा है, अभी तक वैसा नहीं है, गुड़गांव, फरीदाबाद साइड एंड नोएडा इज ऑल्सो देयर आर good builders over there. But I'll say you should see the RERA registration of the builder. You should see how many projects they have delivered. एंड जनरली देखिए, आप अपनी विसिनिटी में जानते ही हैं किस बिल्डर का क्या चल रहा है एंड वेदर यू शुड बाय और नॉट। बट अफोर्डेबल में क्या हो जाता है कि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बिल्डर्स हु आर सिंगल टावर काइंड के बिल्डर्स, कि वो एक ही टावर बनाते हैं एंड दे माइट बी न्यू बिल्डर्स, दे माइट हैव नॉट डिलीवर्ड मेनी प्रोजेक्ट्स। सो देयर यू कैन एक्चुअली फर्स्ट गो टू बैंक एंड आप अपने, और पता है इसमें, अच्छा एक चीज बोलना चाहूंगा, इसमें लोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आप बैंक के पास जाके बोलते हैं ना कि मुझे ये प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, बैंक अपनी तरफ से भी प्रॉपर्टी का लीगल और टेक्निकल इवेल्युएशन कराता है। तो बैंक भी आपको बता देता है कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है कि नहीं। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपके पास पैसा है भी, तब भी आप एक बार लोन के लिए अप्लाई जरूर कर दीजिए। 5-10 हज़ार रुपए जाएगा, बट एक तरह से आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी इवेल्युएशन हो जाएगी, क्योंकि बैंक विल यूज प्रोफेशनल्स एंड दे विल गिव यू कंप्लीट इन एंड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड की बिल्डर का हिस्ट्री क्या चल रहा है, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाए। So you mentioned Atul RERA. So अगर आप for our listeners, many will not be aware of RERA. Most of us has heard. What is RERA in simple terms, if you can help us understand? रेरा गवर्नमेंट स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक, बिकॉज यही जो बिल्डर्स और इस इंडस्ट्री में थोड़ा गलत प्रैक्टिस हो रही थी। सो रेरा इज अ गवर्नमेंट बॉडी एंड जनरली स्टेट लेवल पे अलग अलग रेराज होते हैं। लाइक देर इज अ डिफरेंट रेरा फॉर दिल्ली, देर इज अ डिफरेंट रेरा फॉर महाराष्ट्र। सो दीज आर गवर्निंग बॉडीज बिकॉज इन इंडिया प्रॉपर्टी न्यूएंसेस आर वेरी लोकलाइज्ड। हर हर सिटी में अलग टाइप की प्रॉपर्टी अग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी टाइप्स होते हैं। सो रेरा हेल्प्स इन, so every builder has to register with RERA and they have to provide their timelines. They have to, get their background verifications done. So if suppose a builder has committed कि आप मेरे साथ construction in plan लीजिए और मैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, they will have to give hard timelines to the builder, sorry, to the government. And in case they are missing those timelines, then government has all the three measures, means, and they reward the builder also, they penalize the builder also, and they can take corrective action also on behalf of the customer. So earlier पहले जो ये होता था कि there was not a unified voice against the real estate developers. आज वो रेरा में है कि consumers can go over there and they can fight against that developer cumulatively through a government body. So that is something which has come into play. So you think RERA has helped in real estate? देखिए, पहले से तो बहुत बेटर है। इनफैक्ट बहुत क्लैरिटी आ जाती है एंड जैसे आज हम अगर कोई कस्टमर को प्रॉपर्टी लेनी है और उसको दिखता है बिल्डर इज नॉट, अब वैसे वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जनरली सभी रेरा रजिस्टर होते हैं, नहीं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एक एक कॉशन फ्लैग हो जाता है। एंड प्लस इफ यू गो टू रेरा वेबसाइट यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द बिल्डर। तो वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इन्फॉर्मेशन, अच्छी बात है कि यू गेट दोज टाइमलाइंस ऑल्सो थ्रू फ्रॉम बिल्डर इन अ हार्ड कमिटमेंट वे कि ये होगा। सो यू कैन ऑल्सो प्लान कि अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं तो यू कैन मैनेज इट मच इफेक्टिवली। And Atul, as a player in this segment in real estate, sort of this particular domain, what is your, let's say, suggestion to government? Things they need to improve or things they should introduce, new things, rules, सी, regulation, एक policy? सबसे बड़ी चीज जो मैं हर बार बजट के सेशन से पहले बोलता हूँ वो ये है कि आपको शायद ये, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट आपको पता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे जैसे सीमेंट पे 28% जीएसटी लगता है। नाउ वो जीएसटी हटा देना चाहिए, बिकॉज आप सोचिए वो कस्टमर को डायरेक्टली पे करना पड़ रहा है, बिल्डर थोड़ी ना अपनी जेब से पे करेगा। अगर बिल्डर्स का जीएसटी कम कर दिया जाए तो हाउसिंग बहुत कम हो सकता है रेट, मतलब 28% सीधा कम हो सकता है। अगर सपोज कीजिए जीएसटी जीरो हो जाए, जीरो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट इफ इट कैन बी बॉट डाउन टू 5, 6, 10%, तो 18% रिडक्शन हो सकती है कॉस्ट में। एंड Wow. दैट इज समथिंग विच आई थिंक गवर्नमेंट शुड कंसीडर कि बिल्डिंग मटेरियल्स पे फॉर बिल्डर्स दे शुड बी लो जीएसटी एंड they should be given these tax benefits so that customers can eventually avail that benefit. Second thing जो मुझे लगता है कि if you see the tax saving जो मिलता है होम लोन पे, वो मुझे लगता है कि बहुत अब पुराना हो गया है, बिकॉज यू ओनली गेट 1 लाख एंड 2 लाख का जो आपका सेक्शन 10C और जो भी है, दैट शुड बी रिवाइज्ड। क्योंकि उसके अंदर
क्या है कि आज की डेट में उतना प्रिंसिपल और उतना इंटरेस्ट तो शुरू के 3-4 महीने में निकल जाता है कस्टमर का, 5 महीने में मैक्सिमम निकल जाता है। सो इफ दे कैन गवर्नमेंट कैन increase those limits, so customer will be benefited a lot and builder will also get more demand. And third thing which, sorry, it was in my top of mind, third thing which is very important is sorry, I forgot something. I had a good point in mind. One was GST, one was this thing, tax, and uh, never mind. It will come Sorry. back again. Yeah, yeah. As I was So speaking, there was one more point. It was an important point. Yeah. it happens, it happens. But Yeah, what is the third reason? thing. Yeah, third thing which I'm especially in affordable segment I wanted to say is कि आज की डेट में affordable housing की definition as per प्रधानमंत्री आवास योजना is that in metro where the property price is around 40 lakhs 42 lakhs उस पे जो भी लोन होगा वो affordable housing loan होगा, and there is a lot of good benefits which government provide in terms of interest subsidy, in terms of your principal discounts or subsidies. So idea is कि वो definition को भी revise कर देना चाहिए, बिकॉज आज अगर आप मेट्रोज में देखें तो 40 lakhs इज टू लो. It should actually be revised to around 70-75 lakhs so that more people can avail the benefits of PMAY Yojana. So what is PM Pradhan Mantri Awas Yojana? What is the benefit someone gets out of it? So a lot of benefits. See, first thing is that if you are eligible for that PMAY, especially if you are in economically weaker sections, there it applies more. So what happens is that there is a fixed set of properties which you can buy. Means एक area इतना होना चाहिए, women ownership होनी चाहिए. If you qualify that, then आपका rate of interest बहुत कम हो जाता है. थोड़ा बहुत अच्छा इफेक्ट होता है. That government will pay some amount of interest to the bank. एंड सेकेंडली उसके अंदर आपको कुछ प्रिंसिपल रिडक्शन में मिलता है, दैट देयर इज अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. सो इवेंचुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लीजिए 10-11% पे जाना था, वो इवेंचुअली आपको 7 या 8% पे आ जाता है. तो विच इज अ गुड सेविंग फॉर द कस्टमर. एंड बैंक्स को भी एक बेनिफिट मिलता है कि बैंक्स का एक इनकम मतलब सिक्योर हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट से आनी है. इवन इन देयर इज अ एनपीए, तो एटलीस्ट वो रेजिडुअल वैल्यू जो बैंक सॉरी गवर्नमेंट से आनी है वो आएगी. ऑब्वियसली देयर आर सम चैलेंजेस ओवर देयर आल्सो कि अब गवर्नमेंट बॉडीज पे थोड़ा सा होता है कि टाइम पे पैसा नहीं आता, बट एज ऑन अ concept basis is a very good scheme. And so they have one component like credit linked subsidy scheme under which you get these benefits. Then there are other benefits also like uh, Pradhan Mantri Awas Yojana rural also include this toilet financing kind of program. So गांव में अगर लोगों को टॉयलेट्स वगैरह बनाने हैं तो you get this helps the customer in building keeping the surroundings clean and all. So then there are many other housing related benefits which you get in that, both tangible and intangible, in terms of monetary and non-monetary benefits which help you to have home ownership in a good way. And this is something which government have been pursuing from a very long time. मीन्स आई थिंक मोदी जी तो हमेशा ही बोलते रहते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना. एंड क्योंकि इससे पहले जो था ना वो था इंदिरा आवास योजना करके एक चलती थी, एंड वो इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं था. बट व्हेन पीएम मोदी केम इनटू पावर इन 2013, सो तब उन्होंने रीब्रांड करके एक प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया, एंड वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है. पीपल हैव गॉट बेनिफिट्स. Since you mentioned about our Prime Minister, what is your opinion about him? अच्छा, देखिए पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते. देखिए इलेक्शन का सीजन है. तो यू नेवर नो वेयर इट विल लैंड, तो पॉलिटिक्स में तो नहीं जाते ऑब्वियसली. तो पिछले कुछ साल से अच्छा तो हो ही रहा है देश में. Any other comment या बस इतना ही? देखिए बिजनेस तक ही रखते हैं. देखिए दैट्स समथिंग. Okay. Let's come back to then real estate. So in real estate, Atul, there are many, we keep hearing, if someone buys a property, there is a cash component involved. What is the current scenario? How can it be avoided? Or now all the transactions are non-cash? So help us understand. ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं प्रेफर करती, एंड बट लोग करते हैं, चलता है मार्केट में. द रीजन इज यू कैन नॉट स्टॉप इट. बट वही बात है कि अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रॉपर वैल्यू पे नहीं कराएंगे, बिकॉज द कॉम्पोनेंट यू गिव इन कैश, यू डोंट इंक्लूड दैट इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो कल को आपको भी रिस्क हो सकता है. ठीक है, वो मार्केट में आपको भी पता है इंडिया में दो खाते चलते हैं, एक दिखाने के लिए और एक करने के लिए. तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, पेपर पे क्या है, वो अलग होता है. पूछ रहे थे ना, एक सजेशन और आती है. इंडिया में ना रजिस्ट्रेशन की ये रेट भी बहुत हाई है, अराउंड 8% तक जाता है. इफ यू आर बाइंग एज अ मेल, इफ देयर इज अ वुमेन ओनरशिप तो 7-6% तक आ जाता है. तो प्रॉब्लम इज पीपल अवॉइड रजिस्ट्रीज. पीपल डोंट वांट टू डू रजिस्ट्री या कम रजिस्ट्री करना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ कैश आउटफ्लो. इवन इफ इट्स अ से 20 लाख रुपी होम यू आर बाइंग एंड यू आर डूइंग अ रजिस्ट्री, तो
for any person. So people want to show the value as 10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs. So it is more कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जैसे कम करेगी, जैसे आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इन 2020-21 देयर वाज अ स्पाइक इन हाउसिंग डिमांड, स्पेशली इन महाराष्ट्र, क्योंकि सर्कल में ना, उन सर्कल्स में गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द रजिस्ट्री रेट्स फ्रॉम 8% टू अराउंड आई गेस 4 और 5%. तो पीपल एक्चुअली केम फॉरवर्ड टू डू रजिस्ट्रीज. रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए. हमारे पास इंडिया में फॉर्मल डेटाबेस ऑफ प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? बिकॉज पीपल अवॉइड रजिस्ट्रीज. या देर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. एंड जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा ओनरशिप किसकी है. हाउ विल दे क्रिएट द डेटाबेस? And again, with this registry or with a kind of home loan, it is very important because that puts a piece of land into formal economy. कि एक random piece of land के ऊपर अब एक value attached है, एक legal document attached है, तो that comes into the economy. तो ये बहुत important हो जाता है if you see from the economics perspective also. आज की डेट में if you want to see, और वो GDP के अंदर आ जाता है पूरा उसकी value, तो that helps in growing the country also. But people avoid that. और उसको कंट्रोल करने का, देखिए वो तो वही बात है कि हाउ यू विल कंट्रोल करप्शन इन इंडिया, वो तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, शायद मेरी काबिलियत भी नहीं है उसको आंसर करने की. बट आइडिया इसकी थोड़ा सा हार्श है, 8% रजिस्ट्री अमाउंट, तो पीपल जनरली ट्राई टू अवॉइड इट. And Atul, we keep hearing, or at least I am hearing as lately, abhi are we in a real estate bubble or something? ऐसा तो नहीं है. देखिए रियल एस्टेट ग्रो किया है पिछले 2-3 साल में, बिकॉज इफ यू सी लास्ट टू लास्ट वाला जो हमारा बजट था उसमें रीट्स अलाउ कर दिए थे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी व्हिच इज कमिंग टू इंडिया. प्लस ऑब्वियसली सी वी आर अ ग्रोइंग नेशन विद अ ह्यूज पॉपुलेशन, तो हाउसिंग डिमांड इज ऑलवेज देयर. एंड इन इंडिया पीपल इमोशनली वांट टू बाय हाउसेज. मतलब वो रेंटल वर्सेस हाउसिंग का, ओनिंग का जितना मर्जी आप डिबेट कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे वी आर इमोशनल पीपल, वी वांट टू हैव आवर ओन हाउस. मीन्स योर पेरेंट्स वुड लाइक टू हैव अ स्मॉल पूजा रूम इन द हाउस, जो आप एक रेंटल में नहीं बना सकते. आपको अपने रूम में एक बढ़िया पोस्टर वोस्टर लगा के रहने का शौक होगा, जो आप एक रेंटल घर में नहीं कर पाएंगे. तो देयर इट्स अ मोर ऑफ अ इमोशनल डिसीजन. तो हाउसिंग डिमांड रहेगी बिकॉज ऑफ, एंड अगेन with the changing demographic, people getting more excess income that they have, which they can put in savings. तो demand is coming. अब वो बबल है, कुछ हद तक तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली अब देखिए ना पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है, हाउ द सिटीज आर एक्सपेंडिंग, तो डिमांड तो है, एंड वी आर नॉट एबल टू मीट दैट डिमांड. अब यस, प्राइसिंग का डब हो सकता है कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा मेरे को लगता है पिछले कुछ सालों में भागा. लाइक इफ यू सी आई स्टे इन गुड़गांव, तो गुड़गांव को अगर मैं आपको बताऊं, सो आई टॉक टू बैंकर्स एंड दे से कि हमारे लोन पोर्टफोलियो सिक्योर हो गए हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे घर लिया था 2 साल पहले और हमने लोन किया था, आज उसकी वैल्यू डबल हो गई है. तो मेरा लोन टू वैल्यू जो हमने 70-80% दिया था, दैट इज ड्रॉप टू 30-40%. सो वी आर ऑफरिंग टॉप अप लोन्स टू कस्टमर, की पर्सनल लोन लेना हो तो इसी पे टॉप अप ले लेना, यू विल गेट अ बेटर आरओआई. सो ये मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइसिंग का तो है थोड़ा सा, कि पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा है, एंड हाउ whether these prices will sustain or not, we'll have to see. But demand is there, definitely the demand is there, especially tier 2 tier 3 cities में तो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है आजकल. गाँव में इतना बड़ा क्यों है? ये तो I have also heard so many times, like suddenly the गुड़गांव में price एक्चुअली, is, yeah. हाँ, गुड़गांव में एक्चुअली 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ था. इन पास्ट 10 years, if you see before 2020, the prices were almost stagnant. And then 2020 में ड्यूरिंग कोविड, when the housing demand came, loans were cheaper, तो एक साथ ही मतलब वो एक, क्या बोलिए, एक स्टिमुलस मिल गया, तब से बढ़ी जा रही है. एंड in fact in past 3 years, if you see in Gurgaon, I think it's almost doubled. I bought my house during COVID, and its value is doubled. तो मैं एक यार्डस्टिक तो यूज करी. Wow, wow. Yeah, that's amazing. And you were talking about this point of rental versus buying. थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं. We are emotional people, we know, but technically speaking, emotions को रखे साइड में, poster and मंदिर is side. What is the on ground reality? What is better, renting or buying? ये द रीजन इज कि हर चीज, देखिए हर चीज इकोनॉमिक्स नहीं होती. जैसे मैं एग्जांपल में पहले भी किसी को दे चुका हूँ कि अगर मैं इकोनॉमिक्स देखूं, तो इकोनॉमिक्स ऑफ कीपिंग योर पेरेंट्स इन ओल्ड एज इज बेटर फॉर यू. इनफैक्ट उनको सर वहाँ पे एक अच्छी केयर भी मिलेगी, और आपको भी फ्री टाइम मिलेगा, और आपका पैसा भी कम लगेगा. बट that's not something how world works. You have to take some rational decisions also, and that rationality might be expensive. And देखिए, we are not like US कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी है.
आप समझ रहे हैं कि कल को अगर आपके पास आपकी जॉब चली गई तो रेंट का पैसा देने के लिए होगा। सो इंडिया में रोटी कपड़ा मकान हर इंसान चाहता है मेरा अपना हो, ताकि देखिए सोशल सिक्योरिटी नहीं है इंडिया में, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि कुछ हद तक वी आर नॉट लाइक वेस्ट। आज की डेट में अगर आपकी जॉब नहीं चल रही होगी, नो वन विल हेल्प यू। सो ये तीन चीजें एवरीवन वांट्स टू ओन। मैं रह रहा हूँ, मेरे ऊपर बोले आई हैव अ प्लेस टू स्टे एंड सी, हाउसिंग इज समथिंग व्हिच नॉट ओनली इम्पैक्ट्स यू, इट इम्पैक्ट्स योर फैमिली आल्सो। कि एक बारी को ठीक है खुद को ना हो, बट एटलीस्ट फैमिली शुड बी देयर इन अ प्रॉपर प्लेस, फूड सिक्योरिटी शुड बी देयर, एंड एंड क्लोथिंग, दीज आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो वहां पे इन अ कंट्री लाइक इंडिया ओनरशिप इज इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक्स बनाएंगे तो रेंटिंग अच्छा आ जाएगा, बट सी द अदर सिनेरियोज ऑल्सो, कि कल को अगर जॉब चली गई तो क्या करेंगे आप? गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू मनी की रेंट देते रहो। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ओनिंग मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो देन अतुल, अगर आप होम लोन नहीं दे रहे होते तो आप क्या कर रहे होते आज? मैं यूट्यूबर बन जाता सर। आई थिंक कि नहीं, इट्स अ टफ प्रोफेशन, क्या मजाक कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर होम लोन नहीं दे रहा होता सर तो मैं वही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब कर रहा होता। दैट इज समथिंग आई लाइक, आई एंजॉयड, बट आई गॉट अ वेरी गुड टिप इन एक्चुअली 2011। आई वाज इन हांगकांग, आई यूज्ड टू वर्क विद अ लॉट ऑफ चाइनीज क्लाइंट्स एट दैट टाइम, बिकॉज़ उस समय ना सारे चाइनीज स्टार्टअप्स के आईपीओ हो रहे थे। तो आज 2011 में हो रहा है ना, इंडिया में 10 साल बाद हो रहा होगा। So India is now the hub for entrepreneurship. एंड लकीली 2021 में ही इंडिया के पहले स्टार्टअप का आईपीओ हुआ था, आई गेस जोमेटो, मतलब एक बैच निकला था जो आईपीओ का। सो दैट वाज अ राइट टिप। एंड प्लस थोड़ा फैमिली में भी था, माय ब्रदर स्टार्टेड फ्यू कंपनीज, ही वाज एबल टू सक्सेसफुली सेल देम। माय कजन, अगर आपने एक जयपुर नाम की कंपनी का नाम सुना है तो ही वाज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। सो फैमिली में भी देखा एंटरप्रेन्योरशिप इज वर्किंग। तो सोचा खुद भी ट्राई करते हैं, एंड या इन 2015 केम टू इंडिया कि ठीक है यार अब ट्राई करते हैं, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड अभी चल रहा है। बट अगर यहाँ नहीं होता तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यूट्यूब में सीरियस नहीं थे मतलब? बिजनेस इज डिफरेंट एंड क्रिएटिव थिंग, आई थिंक क्रिएटिविटी इज नॉट यूनिवर्सल, तो वो एक अलग ही एलिमेंट है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो अतुल, अब आते हैं लास्ट लेग ऑफ क्वेश्चंस पे। तो व्हाट इज योर नाउ प्लान इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स? यू वांट टू इंक्रीज लोन डिस्पर्सल? आपको और कुछ कैटेगरी में आना है? लाइक व्हाट्स योर मेजर माइलस्टोन यू आर आइंग नाउ? सी फर्स्ट हमने जो अपना लेंडिंग स्टार्ट किया इन रिस्क शेयरिंग, वी वांट टू इन नेक्स्ट कपल ऑफ इन 6 to 9 months टाइम फ्रेम वी वांट टू टेक लाइसेंस एंड डू को लेंडिंग, कि अपने लोन्स को और अच्छा बनाए, डिजिटल बनाए एंड रीच बढ़ाए। वी आर करंटली इन 30 cities, वी वांट टू गो इनटू 100 cities, एंड देन even have plans ki if we can enter into real estate sales also. The idea is 30% of our customers are those who first take a home loan, sanction लेते हैं, and then they are looking for property. So we believe that we can sell property to them. So वो सब plans हैं, बट मेजर अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि अपनी लैंडिंग को बढ़ाना है, एंड सेकेंडली वी हैव टू रीच 100 cities in next 15 to 20 months, maximum 24 months. Awesome, awesome. It was great to have you, Atul. Anything you want to share from your side, which may I may have missed or something? I think we covered a lot of things. I'm okay. Awesome. Thanks a ton, Atul, for your time. It was such a pleasure. थोड़ा समझ गए हम रियल एस्टेट सेगमेंट में क्या हो रहा है. Hopefully, I was able to help. Means I'm also learning, and this is a very huge industry, especially in India kind of scenario, जहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत localized nuances हैं। एक चीज जैसे एट क्लोजिंग जस्ट वांट टू ऐड कि अगर आप देखें दिल्ली का सबसे बड़ा बिल्डर या नॉर्थ इंडिया का डीएलएफ साउथ में है ही नहीं। साउथ के सबसे बड़े बिल्डर ब्रिगेड एम्बेसी नॉर्थ में नहीं है। मुंबई में जो सबसे दे आर नॉट इवन प्रेजेंट इन साउथ और नॉर्थ। तो बहुत लोकल इंडस्ट्री है, और बहुत बड़ी लोकल इंडस्ट्रीज है कि एक छोटी इंडस्ट्री में भी, एक छोटे एरिया में भी यू कैन मेक बिग कंपनीज इन दैट एरिया। तो सीखना बहुत है इस इंडस्ट्री में। Awesome. We wish you all the best, Atul. Thank you so much थैंक for यू। your time.